Close. Online ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍। All of you are taking preliminary this year? All of you? Yes, sir. चला? ठीक है, बस ये मैं तुम कह दो। So, good evening, friends. From today, we will have a class every Friday. This Friday I could not take because my wife's birthday is there tomorrow. So that's why I'm having the class today. So this picture was taken when I had first gone to London in 1993. Okay, and this was in front of the House of Commons, 93, and that was also my first trip abroad. Okay, I had never gone abroad, so that is why I always keep this picture. With this picture. So just to introduce myself, friends, I did my MA in Applied Economics in 1975. I stood first in the university. Then I joined the Indian Economic Service in 1976. 10 of us. So I never hoped that I will crack Indian Economic Service in the first attempt. And then, of course, joined the Defense Account Service. I did my PhD in 2011. So this is how it is. And since the director is here, so what I have done, I have drawn up a schedule for all of you. Just keep a note, friends. I've drawn a schedule for you. This is the overall plan of my teaching. And if there is any change, director will discuss with me, but this is how we go about it. So first, we will get into introduction to economics. Though many of the things I have been teaching all of you, but I will systematically go through this so that you know you have very clear ideas. And wherever I have taught already, I'll skip through that. But by and large, so we will, please note down, we'll try to understand what is the difference between micro and macroeconomics. We will also try to understand what is an economic system. We say that a country is capitalist, a country is communist, a country is market-oriented economy or a mixed economy. We'll also try to understand that. We will also try to cover three major thinkers. Please note down, there are only three major thinkers in economics. Okay, a lot of people have written, a lot of economics have written of them, but fundamental ideas have come from those three people. One is Adam Smith,
He is the father of market economics. Okay, he's a Scottish economist. He is the father of economics, and more specifically market economics or capitalist economics. Then we have Karl Marx, Karl Marx, who essentially represents socialist thinking, communist thinking, where the state is the predominant player. The state is the predominant player. In a capitalist economy, it is the private enterprises, the business people. They are the predominant players. Then we will also look at Keynes, John Maynard Keynes. We can call him a liberal economist. One is a capitalist economist, one is a socialist economist, and the third is a liberal economist. So whenever you find an the opinion piece in the paper, you will always find that the writer is either influenced by Smith or by Marx or by Keynes. Say, for instance, if Professor Amartya Sen writes about anything, you know that he is following Karl Marx. If Arvind Panagaria, who is our Finance Commission chairman, he writes anything, he is a follower of Adam Smith. If our Raghuram Rajan, who was a governor, writes anything, you know that he is a supporter of Keynes, liberal thinking. So it's very, very important for you that to know what is the ideology behind these writings. It is very, very important. Apart from data, facts, you must have a clear idea what kind of ideology is behind the back of this person. Unlike science, you don't have any ideology. E equal to mc square has no ideology, or mb equal to pt has no ideology. But in liberal arts, in social sciences, there is an ideology. So supposing I speak for the poor, so there is an ideology that I'm a leftist. See, for instance, when I was very young, I was a hardcore leftist. Then I became a liberal. But more importantly, I relied on data, on facts and logic. Are you getting my point? So we'll go into the major thinkers. Now in macro, please note down, in your preliminary examination or your main examination, there will be very few questions on microeconomics. It would be on macroeconomics. It would be on macroeconomics. And in macroeconomics, they will deal with Indian economy. They will deal with what? Indian economy and Odisha economy. Are you all getting me? So you have to be very, very thorough, not only in Indian economy, what is happening in India, but also what is happening within your own state. So both in your main examination and also your interview, maximum questions should be asked by an economics guy. There will be always an economics guy who will keep on harassing you in the interview. And there is a lady also. You can easily imagine the harassment you can be subjected to. Okay. So we have to be very sound on Indian and Odisha economics. The fourth thing I thought I'll just mention to you, that you should have conceptual clarity. Conceptual clarity means don't assume that the meaning would be this. So supposing somebody say, we are going for inclusive growth. Inclusive growth, but some to include. No, don't look at things like that. So each concept, we should be very clear. When I was coming, your director told me that, sir, you cover national income. We'll cover national income. We'll cover what is growth and development. Note karo. We'll cover what is a national income. You will have questions on that. GDP code, GNP code, NNP code, GDP at PPP code. So we must very clearly understand. I mean, here be exercise kariba. Fiscal policy kono, monetary policy kono, or inflation kono. Note karo, kon hala? National income, growth and development, fiscal policy, monetary policy, and inflation. These are major concepts. Tapare fifth thing hala, we have to deal with the sectors. Please note down, it's very important. We have to deal with the sectors. Got a country panchata sector. Please note down. Got agriculture,
all of you please note down, maximum questions come from the agricultural sector. It अनेक समय we overlook that. थोड़ा question आस्ची जो in the main examination, do you think that small land holdings affect productivity? Listen to me the question. Small land holdings affect agricultural productivity. Please support your answer with examples. So the statement coach is the small holding of a country thibo. Are India 90% of our land is small or marginal within 2 hectares. Say coach is kintu China re almost 90% of the land are large, more than 10 hectares. So China's productivity is high because the land holdings are larger. Upon tractor chale paribe, upon productivity would improve. Kintu a question to answer kariya pe, tome generally tome tike पढ़ी कर गले तमे 2-3 रो अधिक पाइबो. It requires a depth. Are you all getting me? Agriculture, industry, infrastructure, social sector, banking and trade. Chhota mon rakho 6. So we'll have at least 6 classes to cover these areas: agriculture, industry, infrastructure, social sector, banking and trade. ये जो 6 sector में cover करिए, please note down. While covering them, we'll go by the economic survey. Please note down. We will go by economic survey of both India and Odisha. बुझ नोट करो एवढा सो नोट कले जाई कोन हबो ना तमे एवढा थॉरनेस आसी तुमको तमे पाई जीवो मेन पाई जो प्रिलिम पाई जीवो सेतरा हमें डेप्थ रे आउट कर दवा किंतु तमे यू हैव मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थिंग तापरे सेटा तापरे हला बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम अछि लेखो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम अछि जो थरे पॉवर्टी मिटिगेशन एम्प्लॉयमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ विकसित भारत एगुडा का सब अछि विकसित भारत विकसित ओडिशा एगुडा को सब आबर तुम्हारा डायरेक्टर पढ़ेबे से पढ़ेबे तो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स सेव कर आर यू ऑल गेटिंग मी और नॉट so I will cover sectors concepts macroeconomics thinkers एगुडा सब मु कवर करिवि on every Friday. Please tell your friends not to miss a single class. तमे थरे गोटे क्लास यदि मिस करतो if you miss a class ताहले तमे एते पंडित नाही तमे खाली कैचअप कर दबो जमा कैचअप कर देबो. Economics is the only subject where if you lose a link it will be very difficult to make it up unless you are a student of economics. It is just please remember कौन हला मैडम तमे कोनटा पढिबा आमे कोनटा पढिबा इफे कोनटा पढिबा किछि ने एसएन मिश्र को सुनिबा एटा खाली लिखिछि तुमको प्लीज नोट डाउन जे इकोनॉमिक्स रे होची जो स्टैंडर्ड बही जतल तमे मेन एग्जामिनेशन को जीवो कि तमे यदि इकोनॉमिक्स गोटे पेपर रखिवो सो द बेसिक बुक इज दैट ऑफ सैमुएल्सन एंड नॉर्धस ए दीटा का पाजी नोबेल प्राइज पाइछन ये पाइछि 1970 मसिया रे Paul Samuelson लेखा Paul Samuelson is considered father of modern economics. Smith है father of economics. Keynes है father of macroeconomics. Please note down. Smith है कौन father of economics. Economics है grandfather. तांको पुआला किए Keynes. Keynes है father of macroeconomics. तांको पुआला किए Samuelson. है father of modern economics. He got Nobel Prize. He was the second recipient of Nobel Prize. Economics and Nobel Prize है 1969 मसीहा रे. He was the second recipient of ଆଉ ତାପରଟା ନର୍ଧସ୍ ପାଇଛି 2018 ଏଇ ବହିଟା is a standard textbook in almost all universities throughout the world. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି କିଟ୍ ରେ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଲି 2012 ରେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି କୁଆଡେ ଗଲା ସାମୁଏଲସନ୍ ବହିଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲାକୁ ଜିଙ୍ଘାନ ଅଛି ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଜିଙ୍ଘାନ କିଏ ଅଗ୍ରୱାଲ କିଏ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ସବୁ ପାଗଳ ମୁଁ କହିଲି ସାମୁଏଲସନ୍ ନାହିଁ କହିଲା ନାଇଁ ସर ସେ କୋଣରେ କିଛି ବହି ଆମେ ଗଦା କରିଛୁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ କୋଣରେ
चूहा तो काटुची सेठी सबमिशन बहिसु पड़िछि माने कहला सर एडा सब झाड़ा झाड़ा सब सेठु पकेली एई अवस्था मुठु जानि गली किट रो केते हाई स्टैंडर्ड अछि इकोनॉमिक्स रे मु जानि गली जेते सब मात्र देले कर तुम जिंगान पढुनो अग्रवाल पढुनो माने जिंगान अग्रवाल सडा ओएस रे भी फेल हिथिबे बोते बुझले कि सो सैमुअलसन प्लीज नोट डाउन सैमुअलसन बहिटा जेते तुम टिके भाबुछ टिके अधिक टिके पढिया पे तर नेशनल इनकम एक्सीलेंट चैप्टर नेशनल इनकम व्हाट इज इकोनॉमिक्स सैमुअलसन पतला बहिटा पढिबो एते बढ़िया इंग्लिश गुडा भारी बढ़िया लिखती इंडियंस माने इंग्लिश ता हुएनी तांको द्वारा इंडियंस मान द्वारा इंग्रजी जमा हुएनी बुझलता किंतु एबा इति सुंदर लेखन्तिया कहबा मु 72 रे आरंभ कली बुझले कि पढे आरंभ कली मु भाई मते अमेरिका रे पीएचडी करथिले कहले तू पढ़ जो सैमुअलसन पढ़ ताल तो जानि सेठु मोर माय लव फॉर इकोनॉमिक्स केम बिकॉज़ आई रेड सैमुअलसन आर यू ऑल गेटिंग मी ओके नेक्स्ट हला हमें इंडियन इकोनॉमी रे देखो ओटा रमेश सिंह बही अछि एटा तो भलो बही रमेश सिंह इज अ गुड बुक ए बहीटा को रखिथिबो तापरे हमें इकोनॉमिक सर्वे एटा को हमें चाटिबा पूरा इंडिया आ ओडिसा एटा चाटिबा पूरा पूरा जेमती माने जो महु लयके चटंती से चटिबाटा पूरा चाटी दो तमे कुइन अरे कुइनन केमती करंती ना गुंड करी कोथे दिए महु कर दिए ना नहीं एम तो सो एई तुमको से सब क्वीनाइन तुमको देबी इधर चटेगिरी मोहरे चटेगिरी इकोनॉमिक सर्वे करे तापर यदि बहुत पंडित होको चाहिमो ताले हिंदू पढिबो जोटा कि हमर मैडम पढछन हिंदू आ उठला बिजनेस स्टैंडर्ड ए सब बहुत पंडित बही आ जदि आपण बहुत लेखा लेखि करे चाहे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एनीवे सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इन दिस क्लास आई विल कवर इकोनॉमिक सर्वे I will also cover whatever current events are happening. Okay. Now, Deepak sir, our schemes would have the class no so this is how we want to go about it. Every Friday I'll take a class. Please note down on Wednesday or Thursday we will have a class on the Odisha Economic Survey. Odisha Economic Survey will be released today. Odisha budget will be released on Monday. So we'll have a class. Tell everybody, including your main examination students, to all attend that. Okay. So economic survey, is that clear to all of you? So now let us go into inflation पढ़िबा inflation पढ़िबा आमे माइक्रो मैक्रो टिके चाडे आरंभ करी कि न करी आज गोटे इन्फ्लेशन आरंभ करिया माने दरदाम बढ़ुची इटा गोटे इन्फ्लेशन पर करिया So, for understanding inflation, all of you must have done. For understanding inflation, you must go into slightly into the depth of it. Prathame, let us define inflation. What is inflation? Please note down. Sustained rise in general level of prices. Please note down. Sustained rise in general level of prices. This is how it has been defined by Paul Samuelson. बहुत लोग बहुत डिफाइन करचंती Samuelson जोटा कहूची सेटा कोई डेफिनेशन दो एथरे कहूचे कोन जे सस्टेन्ड राइज एमिते नाही कि गोटे वीक रे पियाज दाम बढ़ी गला कि पेट्रोल दाम बढ़ी गला नो these are called seasonal inflation. Please note down, these are called seasonal rises. खरा दिने vegetables become costlier, winter vegetables become cheaper. They're all seasonal inflation. But when there is a price rise over a period of time, generally, please note down, for a quarter, as economists, we look at each quarter. Please note down, आमे गोटे financial year पूरा न देखि किरी सेट में सब बड़े result भारियो Q1, Q2, Q3, Q4. Please note down, it's very important. आमे देखियो सब बड़े इकोनॉमिक्स रे जो रिजल्ट्स रा बाहरुची सेतबे रिजल्ट्स होची ईच क्वार्टर अप्रैल बुझी पड़छ ना नहीं so if in a quarter the prices are rising we will say price say for instance just keep a note friends जे in January the consumer price index CPI note करो consumer price index has increased to
2.75%. Now in the last quarter, that is ending December, October to December, it was 1.3. Please note down 1.3. तेनो जदि बुझी पड़छ क्वार्टर 3 रे या थिला माने इन्फ्लेशन थिला वर्तमान हेछि 2.75. So we will say that there is a sustained rise in the general price level. Please note in the general price level. General price level माने you take all goods and services. Please note down all goods and services. आज हमें डिटरमिन करिया किमिति में बाहर छे किम जानिबे तो अब करिया तापर आ गुटे किछि कांसेप्ट देखा गोटा हला होलसेल प्राइस हला a price which is available in wholesale market. तो होलसेल मार्केट रु तुम 6 किलो आलू नेलो तार दाम टा when you go to the retail market गोटे किलो आलू नेलो तार रेट will be much lower. So wholesale price will generally, please note, will generally be lower than the retail price or the consumer price. बुझी पड़छ तुम यदि कहबो सर मते 5 टा यदि नेबे 60 नेबे ताले मु आपन को 100 टका रो 90 टका देबी चप्पल यदि 6 टा नेबे ताले मु 100 टका रो 80 टका करी देखो ने मोर तो गोटे दरकार मु काहा को आउ का तो जता मारिया नहीं फिर मु काहे कि तो 6 टका ने बुझी पड़छ तो सो होलसेल प्राइस बुझी पड़छ तो होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस so we'll try to see how they are measured. This is very important. This is how do we measure this? So this measurement is done by a method called the Laspere method. Please note down Laspere method. So मते हमरो Laspere लेखो सब करिवा so Laspere LESPEY Laspere method. मते थरे हमरो डॉक्टर मंजुषा ओटा पठेले मेसेज पठेले जे तीनटा मेजरमेंट अछि एटा कोन एउडा सब मु कहले अरे ये कोटू पाउची एउडा सब सारा ब्रॉन रो लास्पेर रो कोन तार डिफरेंस मु देखली किंतु तापर चेकअप कली अरे आसुची प्रिलिम रा आसुची लास्पेर मेथडटा कोन बोले आसुची बुझी पड़छ तो so Laspere method is considered the standard method for measuring inflation. So we'll today do that how this is done कारण सेउडा का सब तमे जे पर न बुझी तो तबे एउडा किछि खाली बायांक टापरे खाली हो बुझी पड़छ तो कोनोसी कथा घोषिकरी मन रखिबो हला not a single thing you will do a rote memorization सर कहितले CPI मो जीवन रे throughout my life I have not remembered anything through rote memorization. I have tried to understand logically एटा काई होउची मो कंप्यूटर ता सिखी परली नहीं कारण मो ता लॉजिक ता बुझी परली काहे केमते होउची काहे कि मजरे मते डेमुची काहे कि सेते मते बड़ अरे करिवे बट से शुड बी लॉजिक ता पर देखो एक कांसेप्ट है डिफ्लेशन प्लीज नोट डाउन डिफ्लेशन प्रथम हला इन्फ्लेशन तमे एटा खाली कांसेप्ट प्रथम हला इन्फ्लेशन सेकंड है डिफ्लेशन डिफ्लेशन हला जे persistent fall in prices. This was seen for the first time. Please note down. This was seen for the first time in the US between 1929. Please note down. Between 1929 to 1936. I mean, 30s बोले कहूचे 1929 मसीह स्टार्ट हला 1936 मसीह सरला ए 7 वर्ष कहंती Great Depression of the 30s. जो समय prices came down by 30%. Please note down. The prices came down by how much? Almost around 30%. Around 30%. Is it clear to all of you? Now say summary, please note down, a Great Depression hela that gave rise to John Maynard Keynes. And say to hamara fiscal policy start. Please note down. Great Depression no thanta, fiscal policy no thanta. Are you all getting me? बुझी पड़छन जेतेबेले प्राइस एतर फॉल कला so nobody had seen this kind of a fall in price over a period of time. एमती टिके केतेबेले 5% कोथला एंदु 30% कमिला. So therefore this basically but a प्रत्येक crisis has brought up an economist. Please note down, this is very important. जिते crisis world रे हेछि से crisis रो गोटे इकोनॉमिस्ट जन्म हेछि तार आइडियाज गुडा का जन्म हेछि गुडा खाली पागल होडा लेखु नांती बुझले कि
ताकर जे काम से अनेक जो कथा गुड़ा अच्छी बहुत माने इट हैज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक सो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन डिप्रेशन रु फिस्कल पॉलिसी हेछि मेनली से कहले गोटे नोट कर दियो से मेनली कहले जेतबे इन्फ्लेशन होछि सेतबे तमे मनी सप्लाई टा कमे दे मनी सप्लाई टा कमे दे एनीवे वी विल गो इनटू दैट आइडियाज तापर गोटे लेख नोट करो हाइपर इन्फ्लेशन एटा क्वेश्चन अनेक समय आछी हाइपर इन्फ्लेशन हैपेंड in Germany between 1921 to 1923. Please note down. It 20 में लिखी भूल लिखी. It 1921 to 1923. एटा हला जर्मन रे हितला. Please note down. जेतले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पिला माने हला 2014 to 2018 जेतले हला. When there was our जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हला सेतबेले Germany was asked to pay heavy reparation to the allied countries. Please note down, Germany was asked by the allied powers, which essentially consisted of France, England. USA basically it was England and France. They were the most prominent allied powers. So semane Treaty of Versailles, please note, Treaty of Versailles re 1918 Treaty of Versailles Treaty of Versailles इतना 1919 मसीहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना सरला 14 ରୁ 18 हला 2019 सरला Treaty of Versailles हला सेही थरे इस Treaty of Versailles 1919 सेही थरे इंग्लैंड तरफ रु जॉन मेनर्ड केन्स रिप्रेजेंट करते बुझी पड़छ तो से बुढ़ा को जमा 32 वर्ष हेतला 32 वर्ष रे इते विचक्षण बुद्धि थिला ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन द डिस्कशन सिटू फ्रांस कहला जे एते जर्मनी हमको दोस्त विध्वस्त करी ताको एकदम दोस्त विध्वस्त करतवा सो द चैलेंज इन ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज टू असेस द डैमेज caused by Germany to the Axis powers 1914 रे 1918 रे वार रे केते डैमेज हेची सेटा को असेस करा पे कमिटी थिला So they have to decide the how much reparation. Please note down how much reparation Germany should pay. कितने हबो बोले कितने तक दोस्त विस्त है. So committee कहला जे प्राय $400 million $400 million is the charge. किंतु फ्रांस कहला जे आमे तांको $1200 million चार्ज करे 3 times. तले एमित तांको चार्ज करे जे हम मुक्ति पारिबे बुझिपड़ा एमित तांको माडो दबा जे सब केबे हमको अटैक करि पारिबे. So Keynes opposed that. They don't do that. You charge them 400, charge them 500, but don't charge them $1,200 million. किंतु कहते नहीं गोटे लोक जे तळे पडिची ताको हां गोइठाटे मार दियो गबर सिंह भळा मार दियो गोइठाटे कि ताको जे तमे सला सेठी छुरी मारिबो मला परे ताको दिथर तमे छुरी मारिबो से लोक जे बाय चांस तार जीवन थियो से उठिबो तुमको सेम तो उठिला किए हिटलर. प्लीज नोट डाउन ए जो 1200 मिलियन तक चार्ज कले से हाइपर इन्फ्लेशन बुझल तो जर्मनी को जिते बड़े बुझी पड़छ जिते बड़े एते हाई रेट दो पड़िबो सेठो जर्मनी एकदम देवालिया है गला इतला देवालिया है गला सेठो ये साला हिटलर बाहरला कहला एडा सब बाजी हमको चुन लगछन से कहला जे ठीक अछि let us pay all the debt. So he decided that every German would decide kala je kete kete dele. See, in one go everybody paid off that debt. So we only talk ill of Hitler, but his idea was je ame once we come out of this debt and we revive our economy. sikara amane steel production re ame सबको follow. Our steel is the key to science and growth. टैंक बने हबो हेयरकट हबो सबमरीन हबो सो कहला तमे हमको सो बट द लोन्स दैट द जर्मनी हैड टू पे लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन बुझ पड़छ हाइपर इन्फ्लेशन प्लीज नोट डाउन हाइपर इन्फ्लेशन इज जनरली कॉल्ड 29,500% राइज पर मंथ प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन के आसुची जे केते को हाइपर इन्फ्लेशन होती लिखिबो
29,500 मुझे 30,000 लिखी थी 29,500% जदि ईयर रे राइज करूची ता माने प्रति दिन 100% राइज होची 1000% राइज होची if the rise in price every day is around 1,000%, then it is called hyperinflation. 500 ru 1,000, that's hyperinflation. The world has not noticed that kind of hyperinflation. It is hyperinflation. सर आउ टिके बुझे दियंतु हाइपरइन्फ्लेशन हला गोटे मासरे 500 रु 1000% बढ़ुची माने the prices are so सेतल कोन होची तमर हां मास्टर पर हाच 30,000 हला पर मंथ लिखती प्रा पर मंथ पर डे हला 1000 हला नहीं के 30,000 रु 30 गले 1000 हला नहीं के प्रति दिन 500 रु 1000 हले तो क्वेश्चन आसे केते परसेंटेज होची माने वेरी हाई इट्स अराउंड 1000 माने सही समय जर्मन रे कहतले दी मोस्ट एफिशिएंट फैक्ट्री इज द प्रिंटिंग फैक्ट्री लोक गोटे कार्ड रे नेगिर सब टंका नहीं जाउथिले एमती अवस्था थिला कारण सेते बेले जिंस पत्र बहुत कम रहता सप्लाई वाज लेस देन द डिमांड प्लीज नोट डाउन लॉट ऑफ सप्लाई शॉर्टेजेस जर्मनी वाज फेसिंग सप्लाई शॉर्टेज so anyway we come to that but basically to understand karo the hyperinflation is a phenomena which happened between 1921 to 1923 and this led to rise of Nazism. Okay, finally please note down finally I would term stagflation the onek tharaus stagflation please note down stagflation this term was coined by Milton Friedman please note down stagflation concept was mooted by Milton Friedman. He was a student of John Maynard Keynes. Milton Friedman. से भी Nobel Prize पाइछो. पूछो तो कथा. So stagflation अमेरिका रे दिथर है Please note down. अमेरिका दिथर है गोटा हला 1973 ରୁ 1975 after the oil price rise. Please note down. जेते बेले माने सब गल्फ कंट्रीज माने 5 times बढ़ेले तेल दाम बढ़ेले कारण there was a time 90% of the oil was being supplied by the Gulf countries. So semane in 1971 a jo price ka oil prices were increased by almost 4 times. So that led to inflation. प्रथम थर पई अमेरिका रे 10% रो अधिका inflation हला. Please note down. Now the sad part hochi inflation sangre there is also economic stagnation. Please note down. So stagflation mane hala stagnation plus inflation. What is stagflation? Stagnation in income and inflation in the country. अब बुझी पड़छ तो जदि ए भले उटा सिचुएशन होची जो समय तमरा प्राइस बढ़ुची याडे याडे ग्रोथ कमुची. Okay. So for instance say समय आउथर हला 79 रो 82 रे प्लीज नोट डाउन 79 82 एटा को स्टैगफ्लेशन को कमे पे बुझी पड़छ तो स्टैगफ्लेशन कमे पे मिल्टन फ्रेडमैन came up with monetary policy. So monetary policy रा बापा हले किए मिल्टन फ्रेडमैन से लोगटा ना ऊपर लिखिनी मते भल लागिनी से ता नाडा लिखिनी माने I don't like him at all Milton Friedman माने so it was hardcore capitalist सेटा स्मिथ रा चामचा गोटे तार टटू से गोटे बुझलो तो so कोन तलाला इन्फ्लेशन आ गोटे लेख कांसेप्ट लेख रिफ्लेशन प्लीज नोट डाउन रिफ्लेशन ना उठुनी रे तो कोन एबरा आई अछि हां अछि रिफ्लेशन प्लीज नोट डाउन अनेक समय कौन हम ना एमती गोटे गोटे कौन कहल यर्कर आस गोटे गोटे गुगली आस सार तो पढ़ी न सार कौन यही रिफ्लेशन हाँ ठीक रिफ्लेशन लिख नोट करो रिफ्लेशन तो सार तो कही न सार तो स्टैगफ्लेशन फ्लैगफ्लेशन है कि सामने से गपु गप करते रिफ्लेशन हला प्लीज नोट डाउन व्हेन यू स्टिमुलेट द इकोनॉमी and reverse deflation. Please note down.
Reflation माने you reverse inflation. किमिति करिवो? Through fiscal and monetary policy. How will you do? Through fiscal and monetary policy. Monetary policy रे कौन करिवो? Please note down. You will increase the repo rate. पैसा कम माने मनी सप्लाई तमे कंट्रोल करिवो. Will come to that. खाली एति खाली मन रखो. Monetary policy रे तमे पैसा कमेबो. आ fiscal policy रे तमे government expenditure बढ़े. Okay, we'll come to all that, but basically तमे जानो जे reflation हला reversing inflation. So कौन terms हला ताले? कौन terms हला? Inflation, तापरे stagflation आउ reflation हला. कौन कहला? Stagflation हला जो समय रे तमरो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होची आउ इन्फ्लेशन होची. जेतेबेले इन्फ्लेशन हुए नॉर्मली सेतेबेले इकोनॉमिक कंडीशंस ता इंप्रूव करे. प्लीज नोट डाउन. नॉर्मली कौन हुए जे व्हेन द कंट्री इज विटनेसिंग प्राइस राइज बिजनेस इनकम इंक्रीजेस. बुझी पड़छ तो जद अरे तमे जति प्राइस ता बढ़ियो सेते बिरला हरका को भलो कि नहीं, टाटा बिरला को भलो कि नहीं. अरे बुझी पड़छ कि नहीं. So when there is inflation, which sector benefits the most? The business class. They gain to that. But stagflation is a situation where tankar bhi badha hochi. So there is stagnation for them, and there is inflation. बुझी पड़छ तो ता माने तमर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होची और ता संगरे माने प्राइस मधे बढ़ुची. माने आमे इंडिया जत्ता बेले हमर जो कोविड हेतला. प्लीज नोट डाउन. During COVID time, so many people say India is suffering from stagflation. COVID summer, inflation होतला, आउ तमरो economic stagnation होत. बोथ एकदम जीरो हे गला. हमरो मने पड़छ तमरो से हमरो जो ए समय रे पैंडेमिक समय रे हमरो growth had come down by almost 10 to 12%. Growth had come down, so that is stagflation. सेति पे निर्मला सीतारमण फिस्कल स्टिमुलस लिखरा. लेखो स्टैग्नेशन रे इंडिया एग्जांपल हला इटा कोविड समय रे कोन होतला जे इन्फ्लेशन होतला ता संगरे स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन होतला. सो सेटा करे पे फिस्कल स्टिमुलस करा. बुझी पड़छ तो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. अरे बुझी पड़छ कि नहीं? Yes, sir. How do we measure आमे वर्तमान आसीबा गोटा मेजरिंग इन्फ्लेशन. प्लीज नोट डाउन मेजरिंग इन्फ्लेशन. समझते खाता बाहर करो, पेज बाहर करो तब अरे एटा नालिया करते भला नहीं और हाँ तो कला फल रखिकी तुम गोटे माने ओ सी बोधे कलाटा भल लगे. अच्छा हौ ठीक. समस्ते करो टिके टेबल गोटे बनाओ. एटा बुझीगल माने तमे आ पूरा बुझीगल इन्फ्लेशन. हाँ हाँ करती कि देखो पूरा क्लीन आसी गोटे पटे कि हाँ बढ़िया हो. एडा को थरे बुझीगले ना तुमको आ ये जो कष्ट जिनसटा लागबोनी. ये जो बर्तन तुमको क्विनाइन भितरे महू देकरी एटा होजी चटा हाला. बुझलो तो ठीक है.
सब लोड करो। प्रथम है फूड एंड बेवरेज, नंबर 2 है fuel and power, थर्ड है food, fuel and power, clothing and footwear. इधर लिखा तुम्हें सर सेकंड टा कौन लिखछन क्या होता है? सेकंड है fuel and power, फोर्थ है पान एंड गुटखा, फाइव है miscellaneous. Please note down that there are थर्ड टा कौन लिखी जाए? miscellaneous. सर नंबर 3 टा थर्ड टा है क्लोथिंग एंड फुटवेयर. क्लोथिंग जो टी शर्ट पिंधिच और जो जूता पिंधिच, क्लोथिंग एंड फुटवेयर. तापरे करछि पान एंड गुटखा, पान गुटखा तमाकू सिगरेट बीड़ी. मिसलेनियस रे आसीबो तमरो कन्वेंस आसीबो टेनस आसीबो. सो आमे कोन करिवा, प्लीज नोट डाउन जे जते बेला आमे ए जो प्राइस रेंज देखिया कथा, प्रथम आमे देखिया ओटा बेस एटा होची ऊपर लिखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एटा जो करूची मु, दिस इज थ्रू द लास्ट पेयर मेथड. आई एम डूइंग दिस थ्रू द लास्ट पेयर मेथड. ओके, सो प्रथम आमे देखिबा ओटा बेस ईयर नबा. विल टेक ए बेस ईयर. जदि आमे 2026 कथा कहूचे, what is the reference through which we will measure it? जिम तमे क्लास रे अछ गोटे एवरेज पिला संगे बेस्ट पिला संगे कंपेयर कर. दिस इज व्हाट वी सेड. बुझो तो जला हम इन्फ्लेशन करूचे, we compare with a base year, and base year would be a normal year. This is free from any good monsoon or cyclone flood, and it should be a normal year. Normal तम धान होईची, normal monsoon होईची, so it's a base year. So amar India re, please note down, the base year was 2011-12. Base year for calculating inflation was 2011-12. जमा कथा तो करनी, जहाँ कथा तो मत पचार. चेंज तो है छोड़ सच्चे टिके रामायण टिके, अरे टिके राम आरंभ करो. तुम तो आगु पळेलणी, भरत पाखु पळेलणी. अरे टिके रामचंद्र पाखु चलो. टिके भरत रामचंद्र हला पर तापर जाई कि तुम कहो हनुमान को गलेनी सर आपण दिबा. See, so far, let's understand, so far we were looking at the base year 2011-12. ये तत्तर होनी कारण तमे तो गोटे टेक्निकल क्वेश्चन आसीबो, तमे सेतरे फसी जिवो पड़े. सो आमर गोटे, प्लीज नोट डाउन, we have a consumption survey in the country which is done by NSSO. Consumption survey, this is conducted by NSSO, Department of Statistics. So in 2011-12, they found, they shortlisted, please note down, 299 items. 299 items. Say 299 items को सेमाने करचंती सबग्रुप करचंती under 5 categories. 299 item टा बुझी पड़छो तो. They have been subgrouped under what? 5 categories: food, fuel, clothing, pan, gutka, and miscellaneous. 200. Now then they find out what is the percentage an average Indian spends
on say food. Please note down. So they found that the average amount is 46. तमे यदि 5000 गोटे एवरेज इंडियन जदि 7000 टंका पाउची से फूड आ बेवरेज रे ऑलमोस्ट 46%. 1000 टंका रु केते खर्च करची 460 टंका. सो 460 टंका हला केते वेट हला तार वेट हला 46. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? So when consumption survey comes, we try to find out on an average what is the amount spent on food by an average Indian, median Indian. Now, for instance, in US, the weightage of food and beverage, please note down, is around 20. Korea, only 20. USA, weightage of food, $2000 paucho, on an average, people spend about 15 to 20% on food. But here, people spend around 50%. 50%. Odha almost. Fuel and power hala lekha 6. But simple decimal corning. Clothing and footwear around 6. Pan and gutka hala 2. Ye kete hala 52 or 58. It hala 40. So these are the weights. Is it clear? Is it clear to all of you? So, 299 items have been divided into 5 subgroups, and each subgroup we try to find out जे केते खर्च होची ए हेड रे केते खर्च करछ. तमे एंटरटेनमेंट रे केते खर्च करछ, तमे कन्वेंस रे केते खर्च. प्लीज नोट डाउन एगुडा सब हमर जो नुवा जो इंडेक्स होची सेइथरा हमें देखुची. कन्वेंस रे बहुत अधिक खर्च होची, हाउसिंग रे बहुत खर्च होची. बुझी पड़छ तो? So 2011-12 re, so this is the weightage. Is that clear to all of you? Now P0 hela, P0 kete habo 100 100 100 एउडा को सबु P0 kete habo re 100 एउडा सबु 100 reference year re एटा हला 1. Is that clear to all of you? ए जो P0 के पहला P0 is of 2011-12. Is that clear to all of you? This is your Q. This is your P0. हला तापरे हमें देखिबा जत 2025 रे तमे NSS रे you can join as NSS रे statistical officer. तो तमे देखिबो जे what is the price of this? Say suppose you please note down. I want all of you to do this. So this is 130. This is 140. This is 125. This is 115. And this is 120. Please, all of you do this. All of you, please write down. Now, the formula is for arriving at price index. The formula is please note down. Summation what? P1Q. Please note down. Summation P1Q divided by summation P0Q. बाहर करो. कॉलम कैलकुलेट करो. और दुईटा कॉलम करो. गोटे कॉलम करियो कोन? P0Q आ गोटे कॉलम हला कोन? P1Q करो. मु करिबि नि तुम करो. अरे बुझी पड़छ कि नहीं? I want all of you to understand this and do this. थरे तो तुम एटा करि गले तमर एकदम पूरा नॉलेज अछि. अरे बुझी पड़छ कि नहीं? P0 Q0 प्रथम बाहर करो. तापरे P1 Q बाहर करो. आमे जो P1 संगरे बुझी पड़छ ना नहीं करो. तापर तार टोटल बाहर करो. Summation P1Q is nothing but this one
and summation P0. Am I clear or not clear? बुझियो कि नहीं तमे जमा चिंता करो तो करो तुम बाहर करो आमे P0 को P0 हला प्राइस ताकू तार वेट रे जोड़ीबा आमे P1 हला प्राइस ऑफ ए सब्सिक्वेंट ईयर 2025 आमे जो P0 केबे करथे 2011-12 आउ P1 टा केबे हला 2025 रे आमे 2025 रे कहूचे जे केते प्राइस बढ़ी छि हमर कोन माने व्हाट इज दैट वी आर लुकिंग एट के का को नानी व्हाट आर वी जे आमे 2025 रे 2012 तुलना रे केते बढ़ी छि हैव यू अंडरस्टूड आमे कोन टा प्राइस इंडेक्स रे करूचे जे विथ रेफरेंस टू ए बेस ईयर ऑफ 2011-12 what is the price rise in 2025 for that the formula is summation P1Q divided by summation P0Q करो केते हला नहीं मते P1 को कहो मते P1 P0 Q0 केते को P1 Q0 केते हला को नो P1 Q केते हला 640 630 divided by 500 केते हला ताले केते हला 1 point नहीं 630 into 500 into 100 केते हला 630 into 500 केते हला केते बढ़िला अरे 630 divided by 500 केते हला 1.26 ता माने price has gone up by 26%. One P0 टा केते थिला 1 टा हिची केते 1.26 ता माने 13 वर्ष रे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू 13 वर्ष रे केते बढ़ी ताले प्राइस हैज इंक्रीज बाय 26%. तेणु आम जी 12 वर्ष वर्ष केते बढ़ी अराउंड 2%. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कहा को क्लियर होनी मत कहत इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना नहीं होनी बुझी हलानी समेशन P1 Q0 Q बुझले कि नहीं समेशन P0 Q बुझले कि नहीं तार ए जो 630 by 500 बुझले कि नहीं 630 by 500 केते हो तमरो 1.26 माने केते तर 26% इंक्रीज कला 26% जदि इंक्रीज कला ताहले केते हमर केते टाइम हला 2025 रु 2012 केते हला 13 वर्ष so about 2%. Is that clear to all of you? So the consumer price index has increased by how much 26%. Is that clear to all of you? नाने बुझेला नहीं तब चाहिए बुझियोनी कोडा बुझियोनी कोड हाँ अरे देखो P1Q ता बुझेला कि नहीं तो कहला P1 संगरे Q टा को मल्टीप्लाई कलो कि नहीं ताको समेशन करो केते हला टोटल करो केते हला केते हला रे केते 12,600. So this is 12,600 divided by केते तल केते हला 1.21% ता माने 21%. एटा क्लियर ला गया नहीं तो फिर क्लियर ला नहीं अरे हाँ ओके ठीक है बुझी गेलो ना हां P1 132 46 रे गुणो 140 माने 142 रे 129 रे करी केडी मल्टीप्लाई करी 12,600 similarly
ये 100 to 46, 100 to 6, 100 to 6 सबका मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 400 तो ये डिवाइड करना पर इधर 0 कैटेगरी हाँ सो एटा हमारा 124 by 104 कितना ला 1.2% 1.2% माने 120% राइज ताने 20% राइज होची ताले 20% राइज होची तमरो 13 वर्ष रे क्लियर आद्र बुझी पड़छो सो ए जो बाणी जो कहूतला जे सर 2025 हेलानी सो ए जो बाणी अछि से माने कहउचंती जे वर्तमान कहउचंती आमे बेस टा 2011 बार रखिबा कि आमे 2011 बार को चेंज करिबा प्लीज नोट डाउन immediately sariva so they have found out that the weight of items, please note down, the weight of items has changed भारत रे ए जो weight of items ए जो weight टा को हमें जो 46% थिला जोटा हमें 2011 बार रे करथले से weight टा में कहउछे 2025 रे भी अछि उदी आमे कोन से अस्यूम करछे लास्ट टाइम में कोन अस्यूम करछे जे जो जहा जति परसेंटेज 2011 रे खाउतले एबे भी सेति खाउचंती फ्यूल रे जति खर्च करथले एबे सेति करचंती बुझी पड़छो लुगा पटर जति करथले वर्तमान सेति करचंती सो दिस इज अ रॉन्ग assumption so when you review the consumption please note down when the consumption survey was done in 2023 please note down 2023 एटा हेतला 2011 बार रे 2013 रे पुनी कंजम्पशन सर्वे हला एनुअल कंजम्पशन सर्वे हला बुझी पड़छो एटा तो बुझी गलो तमे 2011 मसिया रे कंजम्पशन सर्वे हेतला जे कंजम्पशन सर्वे प्रति 3 वर्ष रे थरे करत से जो एनएसएस और सर्वेयर्स माने जाई डिफरेंट जगह रे करंती पुनी 2023 रे से माने कले से माने देखिले जे कंजम्पशन हैज चेंज्ड वेरी ड्रास्टिकली फॉर इंस्टेंस फूड एंड बेवरेज has now become 37%. Please note down. Please note down. सीटा बारंबार से कहूची चैलेंज जो करूची सीटा होची कि weight has changed now. 2011 रे जोटा 46% खाउतले वर्तमान भारत रे फूड वेटेज has come down. वर्तमान लोक बेसी मैन्युफैक्चर्ड जिंस करचंती प्रोसेस जिंस करचंती. Have you understood? Please note down. Aguru food item was 46%, non-food item was minus 54% थिला. वर्तमान food item is 37, non-food item is 63%. तमने लोक आजी बेसी सिनेमा देखुचंती, बेसी कन्वेंस रे खर्च करचंती, बेसी हाउसिंग रे खर्च करचंती. Are you all getting me? So are you getting me? So when we do a fresh survey, we find that the consumption pattern of people has changed. People are now seeing more entertainment. Pan gutka in miscellaneous. Now housing, very good question here. Housing today is a very major item. In urban areas it is 10%. In villages it is 2%. So the survey brings out, please note down. Please note down, the new survey brings out the difference in the consumption matrix. Please note down, the new survey brings out the new consumption matrix. ता माने केते हमें खर्च करछे फूड रे खर्च करछे केते क्लोथिंग रे खर्च करछे. It also brings out the difference in the consumption in rural area and urban area. एगुडा को सब तुमको डाटा रे देखेबी. Are you all getting me? बड़ा क्लियर ला कि नहीं बुझ परछो न नहीं. आमे एसेंशियली कोन होची जेतेबेले आमे बेस सेटा बहुत पुराना रखुचे ताले इट डजंट बिकम रियलिस्टिक. तमाने हमर जो वेट जदि हमें कहबा आजिरो वेट हमें 46% दवा it would be unrealistic. So please write down the change in the base year will realistically bring out the change in the base year will realistically bring out how consumption under different subgroups
has changed in India. Has changed in India. Full stop. It will also bring out. It will also bring out the change in the rural and urban sector. It will bring the change in rural and urban sector. Full stop. This helps the government. This will help the government in monetary policy, particularly in determination of repo rate. In determination of repo rate. एक जितने सब हमें टूल्स नौचे तार कौन इम्पैक्ट होची पॉलिसी ऊपर पब्लिक पॉलिसी ऊपर से जो कहतला बारंबार कहतला जे सर 2025 एथ पे हेची जे हमर जो कंजम्पशन का न्यू सर्वे में कले 2011-12 पर 2023-24 रे सर्वे कले वी फाइंड दैट द कंजम्पशन बास्केट्स हैव चेंज्ड एति तमे बुझी गले तमे गोटा मेजर कथा बुझी एटी लिवे दले ठीक है बुझी गले कथा को now I will show you now I will show you the supporting data कौन केमते हेची आमे देखियो हेलो तो तर किछि गोटे फाइनल क्वेश्चंस आछी अबाउट द वेटेज एंड ऑल so it is the now what is a consumer price index? Please note down weighted average of prices of a number of goods and services compared to a base year. Is that clear? Hello? Tell me, Ananya, tell me. No problem. No problem. No problem. Okay, no problem. Sunday is fine with me. No. Yeah. So no problem. No, this 22nd or 29th? 22nd would be little difficult here. My wife's birthday is there. She is going to divorce me if I am engaged in an online discussion with all of you. Not from tomorrow. Not 22nd. Anything after 27. After 27. Otherwise, you. 22nd is out of question, madam. Out of question. 22nd. I will call. I'll call you up a little later. Huh? I'm in a class. I'll call. Yeah. Bayani today. सबू झील गुड़ा बाणी एकदम बुझल कि कथा गुड़ा देखियो पेट फट जीव बुझल कि जिते स्त्री जिते सब बाणी बुद्धि सब बाणी बुझल त वेटेड एवरेज माने वेट संगे प्राइस टा गुणी होची प्लीज नोट डाउन व्हाट इज वेटेड मींस यू आर मल्टीप्लाइंग द वेट विथ द प्राइस वेटेड एवरेज ऑफ number of goods. So weights of different items in total last pair method is summation of this thing. Base year of India accepted. Hala. Household consumption expenditure survey. It is देखो. ये note कर दियो. HCES. It is our question as per tomorrow prelim rate. It is कौन? Household consumption expenditure survey. जो तुम कहलो ना consumption survey, household consumption expenditure survey. Is that clear to all of you? It already I'm calling. So now we come to a very important area. Again, this is something where some questions will come. Okay. Inflation cost account. Please note. Quickly, I will tell you that prelim re jeti ki tum darkar jeti ki सेति मु तुम कहूछ बहुत डेप्थ रे जाउ इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड
either by demand pull, please note down, demand pull or cost push. लेखो लेखो तो बहुत पंडित हुआ जे के लेखो दिए demand pull or by cost push. There's a third thing which I have not written, which is called structural inflation. Next समय question आसीबो, what is a structural inflation? You will not find in Ramesh Singh. किंतु एउडा टिके टिके तुम जानि थिबो ताल तुमको इजी हबो तुम अंडरस्टैंड करबे. गोटे हला डिमांड पुल आ गोटे हला कॉस्ट पुश. डिमांड पुल हला जेतेबेले डिमांड एक्सीड्स सप्लाई. डिमांड एक्सीड्स सप्लाई. तोरा दिवाली हेची समस्ते मिठा खाउ चाहूचंती. मिठा एते नाही सब तो बारे पैसा अछि. Excessive money with the people, but supply cannot be increased. Please note down, when supply cannot be increased, supply is not limited, supply cannot be increased. Suddenly you cannot increase the quantity of supply by about 50 times or this thing. You can't do that. So when there is a mismatch between demand, that means the economy is having more money than supply. Are you all getting me? So this is called demand pull inflation. So Keynes suggested that demand pull inflation होची तमे कोन करो increase taxes. लोगों को tax बेसी बसा. You reduce government expenditure. ताहले कोन होबो? This is how it will shrink your money supply with you. तम पाके जो टंका अछि तमे 30% टैक्स जदी 35% दबो त हातरे कम पैसा आसी. जदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कमेबो त माने बेसिकली तमे इंजन को बेसी गरम करिवो, इंजन के ठंडा करिवो. सेकंड हला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. प्लीज नोट डाउन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन माने हला when there is a increase in the factor inputs. Please note down, factor inputs. Cost push, factor inputs. Factor inputs hela wage increase, increase in the material. Please note down, increase in the material cost. Gotala wage increase. Tara ebe amaro pay commission midibo. Amaro next pay commission midibo, next year midibo. 2027 re midibo. So when there would be a wage increase, he would pachar last time kete badibo, 30% badibo. So that 30% increase of wage will not be accompanied by increase in productivity. Tama to au 30% अधिक काम करियो की. Are you getting my point? तमे तो पे कमीशन तुमको 30% अधिक दबो, तुम प्रोडक्टिविटी अधिक बढ़िबो कि 30%. So that will lead to cost push inflation. Wage has increased, but your productivity has not. Please note down, your wage has increased, but your productivity has not increased. धरो तुम गोटे वर्कर को दौच 200 टका दौच, काली ताको 250 टका दबो. से जो 200 टकाटा जदी 250 टका देला, से 50 टका प्रोडक्टिविटी तार इंप्रूव न होची, ताहले cost push होबो कि नहीं? Cost push inflation was noticed during the oil crisis. Please note down, there 1971 मसेरे जेतबेले हमर ऑयल प्राइसेस बढ़िला, सेतबेले अमेरिका रो बाजा बाजा, अमेरिका पूरा ऑयल किनुतला, सब तरह इंडस्ट्री कॉस्ट बढ़ी गला. So basically cost push means the cost of inputs increase, but the productivity does not increase. जदि productivity बढ़ंता ताले इन्फ्लेशन होबनी. बुझि पड़तो ना नहीं? तमे यदि ऑफिस को आसी कि यदि 10 रे काम करंतो ताले वो productivity कमंता. So in 73-75, as I said, oil price hela. Now please note down what is a structural inflation. Structural, gotala demand pull, agotala cost push. Third hela structural inflation. Structural inflation, please note down. Structural inflation happens when there are infrastructural bottlenecks in a country. When there are infrastructural bottlenecks in an economy. In an economy, structural bottlenecks kono? Tomaro bhalo roads nahi, tomaro bhalo railways nahi, tomaro goods and services cannot move, corridors nahi, freight corridors nahi.
So where your logistics do not flow evenly, then you have a structural issue. तमे कोयला को अने रही छो थोड़ा कोयला वागन से के चोरी करनी है. Are you all right? These are typical problems of developing economies. Please note down. Structural inflation is generally attributed to developing economies. This concept was mooted by an Indian economist. His name was V.K.R.V. Rao. Please note down. V.K.R.V. Rao. He was a minister in the in Indira Gandhi's government. He was a famous economist. He was a direct student of John Maynard Keynes. He set up Delhi School of Economics. V.K.R.V. Rao. से कहले जे सारी जो डिमांड पुल कॉस्ट पुश छोड़ा, developing economies have different problems. What are the different problems? There is no smooth factor movement. Please note down. Smooth factor movements. Smooth factor movements माने tomorrow laborers cannot move from one place to another without difficulty. Your goods and services cannot move. So that is why the government is giving highest importance to infrastructural development. Amar jo inflation India re houni, that one of the reasons is our infrastructural investment. Please note down. अरे बुझी पड़छो कि नहीं? बुझी पड़छो? से बाणी नुह, से बहुत बुद्धिमानी. ये जो हमारा सीतारामन का बहुत बुद्धि. ताऊ कहते हैं किसी जानी नहीं. सुब्रमण्यम को किसी जानी नहीं. अरे से जानी नहीं से किम तो है नॉट बजट किम कला. तू खाली दारू पी गिर खाली सुब्रमण्यम स्वामी से कहले हम कुटू. Now please remember that there is a relationship. Now we would like to see that there is a relationship between repo rate and CPI. Please note down, there is a relationship between repo rate and now जेतेबेले देशरे इन्फ्लेशन होची सेतेबेले रेपो रेट बढ़िबो कि कमियो मते कहलो रेपो रेट बढ़िबो because you want to bring down inflation. Are you getting my point? So whenever the monetary policy committee sits for a meeting, please note down, they will like to see what is the likely inflation. Please note. So जेतेबेले धरा अदर फेब्रुअरी बसिले से मीटिंग बसिले, so they will try to see what is the likely inflation. जे आम नेक्स्ट 2-3 मास रे कौन inflation हबो, बुझलो तो? So if they think, so we'll go into that. If they think that inflation is going to be high, then what will they do? Repo rate would be increased. बर्तमान जिम धरा जो कही थी तुमको बर्तमान केते 2.75 हिची यदि ए मीटर टिके बढी चालिबो ताहाले जो नेक्स्ट रेपो रेट रे आवर जो 5.25 अछि से कमिवार चांस नै से बढी. Are you all getting? Just see here in 2014 जेतेबेले 7.4 थिला सेता रेपो रेट केते थिला तापर सीपीआई देले 5% हला रेपो रेट कमिला. Do you see the relationship? Do you see that or not? Do you see the, so there is an inverse relationship. Please note down, there is an inverse relationship between what? Between inflation and the repo rate. Higher the inflation, higher would be the repo rate. So this is how it is. Direct. Sorry, no, direct. There is a direct positive relationship. Now we come to effects of inflation. Now, gote hala types of inflation hala, tapre hame asba effects of inflation. Now please remember, inflation doesn't affect everybody equally. Some people gain by it and some people lose by it. The people who are most affected are the wage earners. It asibo tumara prelim ra asibo wages and wage earners and pensioners. Please note down. All fixed income groups, wage earners, pensioners and rentiers. Please note down. Rentiers, where rental income depend करते हैं. कि किस माने? कोटे हला wage earners,
तापरे pensioners like me, and that is why we get DA increase. Amar jo DA increase hochi, it is to compensate for increase in the CPI. But please note down, this ways that I'm talking of poor people. People in the informal sector. ताकर DA किसी increase होनी जे तम घर मारुची झाड़ू कुर्ची ताक उधर DA increase करूँ तुम्हें तो उधर नहीं मत पांच तो बहुत पैसा नहीं होते लोग कुछ so it affects the fees income. It helps, but it helps whom? It helps business people and farmers. Please note down. Question is, कहाँ को help करियो? Farmers मन, because they will get more price for their food grains. Business people will gain. See जो कथा से पता चला stagflation रे A group में भी मार खाए. So therefore we say real economic growth. What is the real economic growth? Is equal to nominal growth minus inflation. Please note down what is real growth. Real growth is nominal growth, nominal income growth minus inflation. Say to come with a term use korche deflator. Deflator mane hela P1 by P0. जदि तमरो nominal income एटा को तमे टिके भलो कि मन रख एटा को ये लिखिनियो चल please make this table. Please make this table. Please make this table. खाली टेबल करियो खाली टेबल खाली कॉलेज है कि तमे बुझियो इकोनॉमिक्स. We are trying to understand the concept of real income. इधर हमें real income कौन जिनसटा में we are trying to understand real income. बुझी पड़छो तो real income हला income in terms of goods and services. Please note down income in terms of goods and services. 2025 रे केते पैसा पाउथलो तमे 50,000 पाउथलो 2026 रे तमरा 10% increase हला केते हला. So how much has your nominal income increased? By 10%. Is it clear? Nominal income has increased by how much? By 10%. 10% वो बढ़े 10% और आई है किच रे बढ़े आई किच. So if I want to know what is my real income, please note down. Real income would be nominal income into P0 by P0 into बार करो. If I have to find real income in 2026, what do I do? What was the nominal income in 2026? What is the nominal income in 2026? करो तब करो. Nominal income कितना है? 50,000, 55,000 into how much? P0 कितना थिला? अरे P0 कितना थिला? एबे कितना अच्छी? बार करो कितना है? Please bring it out. करो कैलकुलेट करो ना. 50 बुझी पड़छ ना नहीं. 50,000 टका थिला तमरा लास्ट ईयर रे ए वर्ष तमे पाउछ 55,000. This is what is called nominal income. Nominal income. तापर हमें इन्फ्लेशन रे देखुचे. तापर हमें इन्फ्लेशन रे देखुचे. इन्फ्लेशन रे देखुचे कोन हिची केते? अरे एटा इन्फ्लेशन लिखि दियो. एटा P0 नै एटा इन्फ्लेशन लिखि दियो. टेबल टा लगा रियल इनकम ईयर
नॉमिनल इनकम और इन्फ्लेशन 2025 रे इन्फ्लेशन केते हला यदि हमें 2025 रे हम इन्फ्लेशन ता 100 नहीं छे आउ सेटा को दैट हैज केते हला तन को कोन 5500 आउथर करो 55000 into 100 by 120 ए पुनी बाणी कोन बाहरला सब 55000 into 100 by 120 करो 45830 is that clear? This is the real income. Please note down, this is the real income. What is real income? Nominal income into P0 by P1. So P0 by P1 is called a deflator. P0 by P1 is known as a deflator. Prelim रे question आसियो deflator टा कोन? Deflator हला base price divided by current price. अरे what is deflator? Base price divided by current price. वर्तमान 2023-24 रे हला सेटा P0. अरे आरो जो टेबल टा देखैतिली कोन देखैतिली 2011-12 तमर P0 आ 2025 हेतरा तमर P1. It simple way बुझुची बुझो तो. So has your real income increased or decreased? By how much? By 4270. अरे केते थिला तमर 50000 थिला तो 50000 रा रियल वैल्यू टा केते वर्तमान 45830 तो मारो खाइछ केते कमिला ताले को केते हला 45830 अरे तो कोरोना टिके गोळे खाली कोडिया केते परसेंट कमिला अरे 45830 डिवाइडेड बाय 50000 केते परसेंट हला करो तबे एइटा हो ठीक करछ करो केते हला अरे 45830 डिवाइडेड बाय 50000 हां कते नाही मो कोन ते करूची तबे किछ गोटे कोन क्वाड तबे सब आसीच तबे सब 45830 डिवाइडेड बाय 50000 केते हला 0.83 माने 17% माड़ खाइला. प्लीज नोट बुझी पड़ नहीं अरे ठीक हो नहीं तुम है नहीं कि अरे फटे केते सम हां 0.83% माने 183 हला माने 70% माड़ खाइला. योर रियल इनकम हैज डिक्रीज बाय 17% and your nominal income has increased by 10%. Please note down this. And this is by measuring inflation. अरे बुझी पड़ चुके नहीं तुम्हें नहीं किसी ये सर कहीं कोरोना काम उड़ा हो. Your money income has increased by how much? बहुत खुशी होतला. But तो जो महंगाई तुम्हारे मार दिया महंगाई ने मार दिया पूरा. सो महंगाई ने तुमको साला पिटा एकदम पूरी तरह पिटा. बुझी पड़ नहीं. So therefore please remember that is why I am कहूचे nominal GDP आउ real GDP. Please note down. आम next class रे करिवा nominal GDP आउ रियल जीडीपी. देख कहला गोटे किए बते कहबा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी रे किन बांट करू देखो पर देख ईयर हला लिखो ईयर लिखो 2024 2025 नॉमिनल जीडीपी एटा करो सॉल्व करो समझते $3.8 billion. In 2025 it is $4 billion. CPI is 100 and here it is 106. Please find out the real GDP. Note down all of you. Year हला 24-25 nominal GDP कितने हला 3.8 billion. और 25 रे कितने हला 4 billion.
केते प्राइस थिला माने प्राइस केते थिला 24 रे केते थिला 100 तापरे एबे केते हेची 106 हेची प्लीज फाइंड आउट द रियल जीडीपी किन करिवो सो रियल जीडीपी वुड बी हाउ मच 4 very good equal to 4 into 100 by 106 करो 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 तब हाँ अरे बुझी पड़ चुकी नहीं अरे व्हाट इज योर नॉमिनल जीडीपी नाउ खाली मस्ती करिया का नहीं मस्ती करिया देखी 4 बिलियन into 100 divided by 106 कितना हला 3.77 so has real GDP increased or decreased from 3.8 to 3.77 अरे बुझी पड़ चुके नहीं बुझियो नहीं हाँ हाँ कहीं मिस्टेक होची ध्यान दियो ठीक है प्लीज पे अटेंशन प्लीज पे अटेंशन प्रथमे तुम नोट कल ईयर नोट कल कि नहीं आमर रियल जीडीपी रो डेफिनेशन कोन तो निजे लिख व्हाट इज रियल जीडीपी इनटू P0 by P1 एते कोन घंटा हला मु बुझबालिनी हला नॉमिनल जीडीपी केते हला 4 बिलियन अरे नॉमिनल जीडीपी केते हला इंडिया इज $4 ट्रिलियन सॉरी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन केबे हितला 2025 रे so what is the increase in nominal GDP केते हला 4 divided by 3.8 केते हला तो पॉइंट टू किमती 4 divided by 3.8 केते हला तले 5% इंक्रीज इज दैट क्लियर ना घंटा हला पुणी व्हाट इज द रियल जीडीपी real GDP is how much 4 into 100 divided by 106 how much is it 3.77 so real so say time with the national income podiva next class re have you now understood what hela nominal GDP एटा घंटा पुणी हला ना नहीं अरे सब हला ना नहीं nominal these are the questions which will come in the prelims and all this you understand by looking at the reason why I thought that I'll share this with all of you the inflation through a deflation please note down we know the real income of a country through a mechanism called a deflation which is P0 by P1 तमरे केते अगुरु बेस रे कोन थला प्राइस एबे कोन अछि तम थरो दरमा बढ़ी छि 10% किंतु महंगाई 12% हैगा ताले कोन दला 2 वर्ष माड खेलन ना नहीं अरे तमर दरमा बढ़ी छि 10% प्राइस बढ़ी छि 5% तमर रियल इनकम बढ़ला कि नहीं बढ़ला ना 5% बढ़ला ना हां अरे तमर 10% दरमा बढ़ी छि 5% प्राइस बढ़ी छि तमर रियल इनकम बढ़ला कि नहीं बढ़ला ना जमा तार मन नहीं से बॉयफ्रेंड को तार मन पुरछि कोन गोटे चक्कर मारी के आछि से रहउछि अरे रियल इनकम हला प्लीज नोट डाउन रियल इनकम इज मनी इनकम माइनस इन्फ्लेशन तमरो इनकम रे केते सुना ए गुडा का सब थरा तमरा क्लैरिटी आसी गला माने ताहले तमरो कोन सी इकोनॉमिक्स रे डिफिकल्टी होबे बुझलो तो सो हैव यू अंडरस्टूड आउ दितिना साइड तो पूरा तमरो इन्फ्लेशन बुझी गलो कि नहीं माने how it is important for you to know whether your income real income mane kono whether your actual income in terms of goods and services is increasing or not धर तमे गोटे कोकोकोला खाउछ आज 50 टका रे खाउछ तुमको काली से कोकोकोला 60 टका हबो तुमको 50 टका 55 टका तो अधिया मिलुची तमे पी परियो से 60 टका पी परियो की तो दिस इज हाउ इट इज बुझी पड़छ तो कथा how is it terminology बढ़िया 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 हाँ अरे बुझी पड़छ ना नहीं तुम पुणी घाटा पुणी करके सार घाटी देले एटा घाटीले जाके तुम बुझी परिबो डिफ्लेटर माने बुझी पारना नहीं वेरी सिंपल कांसेप्ट
एगुड़ाक सब बीए रे आम आरंभ करूँ इकोनॉमिक्स आरंभ करूँ से सब पढ़ू 72 कथा कहूँ 1972 मसीहा कहूँ बापा जन्म होते कि नहीं के तो तुम तो छाड़ तुम 72 मसीह बापा जन्म होते नहीं 28 प्लस 26 केते हला 54 वर्ष तले एड़ा पढ़ाई से 54 वर्ष तले एड़ा सब पढ़ाई 72 रे एड़ा आरंभ होता इन्फ्लेशन पढ़ाउतला बुझी पड़छो तो माने किछि ओरे बाणी टाइप होतो एटा किछि आरंभ इकोनॉमिक्स रा आरंभ एड़ा का सब these are all माने beginning in economics okay देखो in India inflation is measured by what whole CPI give her a big hand for measuring changes in the price level country which among the following index is used kuta consumer price index economic growth is usually coupled with what Inflation. ग्रोथ होने इन्फ्लेशन अब सार ऑलरेडी कहले चारिटा पॉइंट जो सार कहले चारिटा को ऑलरेडी परीक्षा पड़छ व्हाट वी मीन बाय इन्फ्लेशन यदि द जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस ओपीएससी 2020 रे क्वेश्चन पूरा रिमेंबर ए लाइन inflation rate based on consumer price increases if repo rate is back rate is decreased reverse rate is decreased repo rate is increased देख तो केते आराम रे तो होची एबे कहउतला घांटो हे गला बोली बुझल त which is incorrect about inflation हां यूपीएससी आईएस 2013 रे क्वेश्चन एरा थला एटा करो सर केटा एते संगे से पढिले inflation benefits debtors inflation benefits the bond holders Only one. वाह जी कहि दिबे ओ एटा करेक्ट आंसर ताको मु 100 टका देबे को 0 it benefits please note down please write down this question it benefits कौन लिखी छी consider the first inflation benefits the debtors inflation benefits the bondholder what is a bondholder huh please note down एमती गधा भली तुम सब माड़ खाऊ ये please note down what a company sells shares and bonds please note down shares and bonds what a company shares bikuchi so share prices can fluctuate bond returns are fixed please note down bond is a fixed instrument ए थ्रू तुमको 8% की 7% बुझी पड़छो but share prices manjusa can increase share returns can decrease so bond rate जदी कौन क्वेश्चन थिला हां कौन क्वेश्चन थिला जे inflation benefits the bond holders then bond holders कौन हबो bond holders will benefit from this or they will so inflation हेले ताको कम पैसा तो पड़िबो अरे बुझ पड़छो तो so this answer would be both 1 and 2 तो मने मने चूड़ा खाइ के एक खाली कहूतलो it is both 1 and 2 anyway हम ठीक है लास्ट तो 5 मिनट खाली कर दिला को साथ हम एटा तको एटा दबा दमु ए थ्रू हां हमें तुमको सब क्वेश्चन दे दी तुमको तुम ठीक करिवो तुम बस के नहले मोटो सारी दमु ठीक है मोटे सारी दउ तुमको ए ता पढेला परे the reason why the director is showing it this is what we will do from next class मु घंटा पढेबी तापर हमें क्वेश्चन रखि दवा ताहाले कोन होबा ना तुमको बा घंटे 15 मिनिट पढेबी तापर तुम क्लास हो बुझलो तो ताहाले तमर कोन होबो ना तुम तमर सब्सिक्वेंट कर दियो सो हां
हां तो आकु चलो हां 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 आकु चलो गोटे क्वेश्चन आसे सुनो प्लीज नोट डाउन एटा गोटे टेक्निकल क्वेश्चन आसे व्हाट इज ए फिलिप कर्व प्लीज नोट डाउन व्हाट इज ए फिलिप कर्व प्लीज नोट डाउन एटा अनेक थर प्लीज नोट डाउन अनेक थर एटा बोथ इन यूपीएससी एंड ओएस रे आछ मु काहे केटा को इंक्लूड करछि पिला माने जे तमे अदरवाइज ए क्वेश्चन थरे पूरा लड्डू नहीं के आसे नाउ फिलिप was the first person who found that there is an inverse relationship between inflation and unemployment. There is an inverse relationship between inflation and unemployment. Higher the inflation, please note down, higher the inflation, lower would be the unemployment. प्राइस जिते बढ़िबो सेति की लोक काम करे को आसीबे जिति प्राइस बढ़िबो प्राइस संगे वेज बढ़िबो प्लीज नोट डाउन whenever inflation increases wage also will increase so therefore unemployment will decrease but when inflation is low setebale unemployment would be very एटा कहती फिलिप कर्व ना it establishes an inverse relationship between so many people say that it is better to have small unemployment than major employment. So don't worry much about inflation high inflation or low employment please note down high inflation and low employment is better for a country than low inflation and high unemployment. एति खाली बन रख this is बुझी पड़छ तो have you understood high inflation and low employment तबने लोकों पाखरे काम अछि सेटा बेटर ना काम नाही इन्फ्लेशन कम अछि अरे माछ दाम बढ़ुनी किंतु सरा मोर चाकरी नाही सेटा बेटर कि मो पारे काम अछि माछ दाम बढ़ुछ कोटा बेटर पैसा अछि माछ this is what was explained in the Phillips curve. Say for a country it is better that we give more price increase wage increase let inflation be there एति खाली कुछ पड़छ तो सो एति खाली मन रखो तमे तबेटा सर्कुलेट कर दियो तबे आउ किछ नै द मोस्ट डब्ल्यूपीएस सीपीए सो हेता किछ नै तापर गोटा पढी के तमे बुझी परिबो किंतु तमे एति की मन रखो एटा को विल सर्कुलेट टू ऑल ऑफ यू तो सर्कुलेट कर दबो ता संगे तमे किछ क्वेश्चंस ठीक पठे तमे संगे से कर दबो कर देल आमे कोन करबा ना जो चैप्टर मु पढेबी सेही चैप्टर रे तुमको कहि देबी तो सेही को चैप्टर रे जहा क्वेश्चंस थिबो सेउडा को तमे नामे हमरा जो 1.5 घंटा में पढुचे घंटे 10 मिनिट 15 मिनिट मु पढे देबी आ 15 मिनिट रे तमे तो करिवो जे पण तमे निजे नको थारे त कॉन्फिडेंस आसी गला बुझी पड़छ तो तबे शेयर और बॉन्ड को समान होल होतलो हां तब भाबतो समान ना ठीक अछि सो ए क्लास टे जोडा होचे डोंट मिस इट पूरा सर जोडा आज पढेले माने तमे जाई कि जदी क्वेश्चन आज देखिबो माने मु भाबुतली सेटा जस्ट मु देखैई बोली जहां भी क्वेश्चन पढिबो विल डू ऑल द क्वेश्चन माने सबु एते डिटेल ले सर कहिले जो कांसेप्ट गुडा को जदी जने पढिबो आई थिंक दिस इज वन माने तमे जदी कोठी YouTube रे भी देखिबो हम देखि दियो अन्य मानकर YouTube भी देखि दियो सर जो कहिले जे हाइपर इन्फ्लेशन जोडा होची कि सडनली राइज हे जबो जेमति कि सर कहिले कि माने पूरा माने वर्ल्ड वार 2 परे माने तमे गोटे बास्केट रे पैसा नै कि जाउतले गोटे ब्रेड पई हमरा मझिरे जिम्बाब्वे रो गोटे माने चॉकलेट रो दाम 10,000 तो सेही बडा सडनली जदी प्राइस राइज हे जबो तो ई चारिडा का कांसेप्ट सर जोडा पढैतिले जे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन आउ जोडा हाइपर जो हाइपर इन्फ्लेशन जोडा एंड रिफ्लेक्शन ए पांचटा का कांसेप्ट ऑलरेडी यूपीएससी रे पढी सारी तेणु ओपीएससी रे सर जोडा पढैले আজি मन रख कि जदी जनरल प्राइस राइज होची ग्रेजुअली सर कहले ना कि ग्रेजुअली जदी राइज होची एटा इन्फ्लेशन ग्रेजुअली जदी डिक्रीज होची तो सेटा रिफ्लेक्शन होची एंड स्टैग्नेशन कहले जे हमर इकोनॉमीटा स्टैग्नेट होची किंतु इन्फ्लेशन होची
और हाइपर इन्फ्लेशन है सडनली तर आमर एबे जो इन्फ्लेशन रेट टा आमर 2 रु 6% भितर रहिया दरकार आरबीआई रो 4 +-2 तो सेटा जदि तमर सडनली आमर हे जिवो सपोज 20% हे जिवो तो सेटा हमें कहबा जे हाइपर इन्फ्लेशन इमीडिएटली हमें कहबा particularly affect the poor income group, fixed income group and the poor. So poor and the fixed income group are affected the most. तो सही This कांसेप्ट will people will benefit from that. So there are fixed income achi. So they will be अच्छा. ओके तो अच्छी बात है मैंने दरदाम बढ़ो से 5% और डीए बढ़ो से 3%. ओके सो ए सब क्वेश्चन गुडा ओके सो ए सब क्वेश्चन जो गुडा तमरा पढी छी देखो आईएएस 2010 रे पढीतिला जे कोन हमर व्हाट डू एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन तो एटा 2010 रा आईएएस रा क्वेश्चन थिला तो हमर कोन हबो सडनली फॉल हबो ना परसिस्टेंस हमर जदी डिक्रीज हबो इट इज ए परसिस्टेंट फॉल ऑन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जदी ग्रेजुअली डिक्रीज हैला तो डिफ्लेक्शन जदी ग्रेजुअली इंक्रीज हैला सेटा इन्फ्लेशन सर जो कांसेप्ट गुडा पढेले तो ताको ध्यान से सुनुथबो जो गुडा का जदी पढेले पूरा इन्फ्लेशन चैप्टर तमे जदी आउथरे वीडियोटा देखिबो विल सेंड द रिकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन तापरे इमीडिएटली करिवो जे जो कांसेप्ट गुडा का हम सर पढेले एंड आई कैन गारंटी यू कि जेते भी क्वेश्चन तमरा अछि रिलेटेड टू इन्फ्लेशन सर कहले कि धर इन्फ्लेशन होउची तो मनी सप्लाई टाको हमें मार्केट रु कम कर दिबा दरकार तो मनी सप्लाई कम कले हमरो इन्फ्लेशन टा कंट्रोल को आसीबो तो मनी सप्लाई केमिति कम करिबा ना रिपो रेट टा सर कहले बढ़े तेनु सेति भाई रिपो रेट टा बढ़ा जाय कोन भाई ना जदी मनी सप्लाई कम हे गला ताहाले हमर कहा पाखरे जदी पैसा न रहिबो ताहाले जिंस पत्र किनिबेन तो डिमांड टा ऑटोमेटिकली कम आसी जिवो जो दीडा को सर कहले कि सप्लाई डिमांड रो मिसमैच जो रहउची जदी डिमांड बढ़ी गला भी हमर पैसा माने इन्फ्लेशन हबो आउ तमर जदी सैलरी भी बढ़ी गला जोटा कि हम कहले 8 पे कमिशन सर कहले सेतिरे भी हमर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हबो तो जो जो कांसेप्ट उडा पढेले पूरा इन्फ्लेशन पई तमे आईएएस हो माने इंडिया रे जे कोनोसी एग्जाम तमे दबो सो दिस इज माने आउ जो कांसेप्ट उडा का हमर सर आज पढेले फिलिप्स का पढेले ओपीएससी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढितला ओके तो जो सर जोटा ऑलरेडी मॉड्यूल टा डिजाइन करिसंती एग्जैक्टली तमे जदी एतिक ही पढिलो आईएएस हो ओएस हो जहां भी क्वेश्चन पढिबो इट विल बी आउ सर एते डिटेल ले पढुछन जे काहे कि हमर संगे संगे हाइपर इन्फ्लेशन हैला मे बी मु भी जान नथि सर आज कहले कि जे हां ग्रेट डिप्रेशन समय रे सडनली हमर जते बेले माने पूरा हमर इकोनॉमी टा कोलैप्स हे गला तो सब गुडा का हमर हाइपर इन्फ्लेशन आडू हमें गले ओके कि सेही सब पैंडेमिक समय जो कहली मो स्टैगफ्लेशन बेस्ट एग्जांपल सर कहले कारण पूरा वर्ल्ड रे इकोनॉमी डाउन थिला इंडिया रो नेगेटिव को जाई नथला किंतु जीरो हे जाइतला हमर इकोनॉमी ग्रोथ होउनी किंतु दरदाम सेही अनुसार बढ़ी गला तो दैट इज ए बेस्ट एग्जांपल सर जोडा कहले स्टैगफ्लेशन सेनु ए जो एक्सपीरियंस आउ तमे देखुछ जोडा बही रे तमे खोजिले कोडी पाइबनी तमे YouTube रे आई कैन गारंटी यू इंडिया रो जे कोनसी YouTube तमे देखि दियो ए कांसेप्ट तमे बुझी परिबनी सेनु सेति पई जो क्लास गुडा कहूछ सर करो डोंट मिस ए सिंगल क्लास इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तमे बुझी माने एटा जदी एति कि सुनी देलो भी आई कैन गारंटी तापर हमें क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करबा सब गुडा को जेतोले किंतु तमे ए कांसेप्ट को भलसे बुझी ओके आगे तेणु से सब क्वेश्चन गुडा हमें पर करबा तेणु जो जो गुडा सर कहले एवरीथिंग जे हमर तमर देखिबो एठी जे सर गोटे खाली क्वेश्चन मु माने आईएएस रे जो क्वेश्चन तमर पढिछि तेणु तमे एबे रियलाइज करि परिबो जे काहे कि एई गुडा हमर इंपोर्टेंट जोडा को स्टैगफ्लेशन भी अच्छी थी again an expression coined by economists to describe an economy that is growing at such a low pace that more jobs are being lost than are being added. ओके तेणु एई सब क्वेश्चन गुडा हमें देखिबा जोडा हमर आ गुडे हमर पढितला सर जो एनएसएसओ कहले तो हमर जो डाटा गुडा हमर जो सर्वे होची लास्ट ईयर ओपीएससी 2025 रा क्वेश्चन देखो जे किए सर्वे हां फर्स्ट क्वेश्चन जो थिला जे प्रथम क्वेश्चन हमर ओपीएससी रा थिला कि सर्वेटा किए करूची एनएसएसओ हमर करूची ओके तो ए सब जहां भी सर पढेले पूरा टोटल तो सेटा को तमे तला हमें क्वेश्चन करबा यू विल रियलाइज कि सर जहां भी पढेले जहां भी परीक्षा रे पढिबो सेति की तार भितर ही आसुची ओके सो डोंट मिस ए सिंगल क्लास तेणु एते माने तार पछर बैकग्राउंड बुझिया बहुत गोटे इकोनॉमी गोटे टेक्निकल पाठ तेणु जणे जदी सेति की प्रैक्टिकली माने तमे जे रियल जिंसटा को जानि छि न तांकटो न पडले तमे बुझी परिबो तेणु एडा
बहुत मजा कथा हमको गोटे लिखिछि आर्टिकल यार लिखिछि कंज्यूमर राइट्स मूवमेंट लिखिछि गोटे आर्टिकल लिखिछि सेठू मोर गोटे सांग ये अछि कोन कहना रमेश मिश्रा से ओडिसा कैडर आईएएस अफसर से फर्स्ट एकला कंप्यूटर साइंस रे और आईएएस रे 8 तक पुस्तक बहुत पढ़े तो डाक्यूटर है I guess. कंप्यूटर से खूब से मते लिखला मते रिप्लाई देछि I guess. जे माने ए विषय मते सुभाष गर्ग जे थिला अनुपम जे अछि हस्बैंड सुभाष गर्ग मते पहिला कॉल पर लिखली तो तुम आर्टिकल ता पढ़ना पर सत्य को जानली जे सुभाष गर्ग का किछि जाने I guess. तो जानबे क्या जानली कि तमे केते डेप्थ में जाई छ कुछ बट आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट मैंने तो पढ़ी पढ़ी देखछु जिनसवा को प्रैक्टिकल कुछ देखछु तो आर्टिकल हेल्प करो तुमको डेफिनेटली है Okay. So it our last question. The most common measure to estimate inflation in India. What is like UPPCS रो? और हमर कौन होगा इटा? सर पूरा पढ़े कैलकुलेट करके देखिले कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डिफरेंट हमर वेटेड एवरेज नै कि तापरे मल्टीप्लाई करके देखिले. ओके. नेवर गेट कंफ्यूज जेमते अर्जुन देखुला से तार जो आखी को देखुला मात्रा देखै नथला से पीपल ता देखला बोली सेठी मारला तमे अर्जुन को हाव करू नला खाली कोठी द्रौपदी पाइबो तमे वो भी पाइबो हां ठीक है guys. Thank you. Thank you, sir. अब नेक्स्ट हमारे नवीन सर